जाको राके साइया मार सके न कोई। किछु एहने घटना भारत में जे प्लेन क्रैश भेल छै ताहिमे देखल गेल। अधिकांश यात्री स्वर्गीय भऽ गेल अर्थात मरि गेल, लेकिन एक गोटे विश्वास कुमार बाँचल अछि। लेकिन अहूसँ बेसी एकटा और चमत्कार भेल अछि। गीता पुस्तक जे छै से पूरे राख भऽ गेलै, मने छाउर भऽ गेल छलै जाहिठाम जड़ि कऽ, ताहि बीचसँ एकटा गीता भेटल अछि। आ ओ गीता आ विश्वास कुमार दूटाके एखन भारत मात्र नहि सबठाम चर्चा, खासकर चमत्कारसँ जोड़ि कऽ चर्चा भऽ रहल अछि। एयर इंडियाक अहमदाबादसँ लंदन गेटविक जा रहल बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश भेलाक बाद पूरे संसारके झकझोरि देलक अछि। मुदा प्लेन क्रैश साइट पर दूटा एहन घटना आगाँ आयल अछि जे विज्ञान आ तर्कके सीमाके सँ बेसी आस्था आ चमत्कारके रूपमे चर्चाके विषय बनल अछि। जतऽ एक दिस एहि दर्दनाक घटनासँ 265 लोकक मृत्यु भेल अछि, ओतहि प्लेनमे 11 सीट पर बैसल रमेश विश्वास कोनो चमत्कारिक रूपसँ जीवित बचि गेल अछि। हुनका स्वयं आश्चर्य भऽ रहल अछि जे एहि चमत्कारसँ केना बचलहुँ। आ एहि सङ्गे सङ्गे एकटा भागवत गीता सेहो भेटल अछि। चारू दिस आगि लागल छल आ बीचमे ओ किताब भेटल अछि। ओ किताबके मे कनिको आगि नहि लागल अछि, सामान्य रूपसँ कारी ऊपरसँ देखायल जा रहल अछि, मुदा कोनो प्रकारसँ ओहिमे आगि नहि लागल अछि। एकरा चमत्कारसँ कम नहि मानल जा रहल अछि। आ प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्टसँ उड़ान भरला किछु मिनट भीतर मेघानी नगरक एकटा इलाका जाहिमे मेडिकल कॉलेजक हॉस्टलके बिल्डिंगसँ टकराओल छल। जखन विमान दुर्घटनाग्रस्त भेल ओहि समय एकदम जोरसँ कानके आगिके लगायतके कतहु आवाज आयल, कतहु आगि लागल, तेहन अवस्था छल। लेकिन ओहि अवस्थासँ विश्वास कुमार जीवित बचि कऽ एकटा चमत्कारसँ कमके घटना नहि भेल अछि। ओ स्वयं कहलथि जे हमरा कनि कालके लेल भऽ गेल छल जे हम जीवित नहि उतरब या एहिमेसँ नहि निकलब, मुदा बिल्डिंगके निचला हिस्सा टकरेलासँ ऊपरके हिस्सामे आगि लागि गेल छल आ सब फँसि गेल छल। लेकिन हम दरवाजा जे गेट जे छल टूटि गेल छल आ हम सहजे निकलि गेलहुँ। दोसर दिस जे भागवत गीता ओहिठाम जे भेटल अछि ओकरा ऊपर तऽ कनि कारी पोतायल छै, लेकिन सहजे पढ़ल जा सकै छै। पूरे जखन अहाँके गन्दा सब हटाओल गेलै ताहि क्रममे ई गीता भेटल अछि।